गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एमकॉम सेमेस्टर 3 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। आज हम CFR के 4 यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर के MCQ सॉल्व करेंगे। 18, 19 एंड 21 नवंबर एंड ऑल्सो जनवरी। ओके, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इन इंग्लिश मीडियम नवंबर 2021 हम लोग लेटेस्ट से शुरू कर रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट? Assets and liability, income and expenditure, equity, owners fund, all of the above. Obviously all of the above. ये तीनों ही आपके financial statement के elements हैं. Which of the following Indian accounting standard relates to earning per share? Indian accounting standard 33 is related to your earning per shares. Right? चलिए आगे बढ़ते हैं. Which of the following are essential qualities of good financial report? ये आपके question में से आएगा. Faithful, full disclosure, factual and all of the above. Which of the following are essential qualities of good financial reports? Faithful, full disclosure, factual and all of the above. Your answer is all of the above क्योंकि ये तीनों ही 7F अगर आपको याद है 7F of financial reporting for the theory purpose उसी का ये questions है. Which of the following is included in mandatory quantitative disclosure? आप सबको पता है कि मैंने एक ही क्वेश्चन पूरा एक्सप्लेन किया है थ्योरी में एंड दैट इज़ डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. और आपको मैंने जब ओवरव्यू ऑफ सिलेबस दिया था उसमें भी एक्सप्लेन किया था. इंपॉर्टेंट थ्योरी जब दी तभी भी आपको कहा है और ये 4th टाइम आई एम टेलिंग यू दैट डिस्क्लोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चन पेपर फॉर द MCQ पर्पस. सो मैंडेटरी क्वांटिटेटिव तो इट इज़ कैश फ्लो स्टेटमेंट. मैंडेटरी में कैश फ्लो आता है, वैल्यू एडेड फंड फ्लो और ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग नहीं आता. उसमें वैल्यू एडेड एंड ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग इज़ प्योरली वॉलंटरी statement, right? Indian corporate accounts are regulated by which of the followings? So definitely all of the above. Indian Companies Act, professional bodies and regulatory bodies. Regulatory bodies like RBI, SEBI, IRDA, and professional body is ICAI, in Institute of Chartered Accounts of India. Like, which of the following is a component of voluntary disclosure? Human resource accounting is voluntary disclosure, okay? Because directors reports and auditor reports is mandatory disclosure. Which of the following are main objective of financial reporting? Again all of the above. To measure the earning effectiveness and efficiency, to know the financial soundness, to provide information which is useful to investor, auditors and others. So answer is all of the above. SEBI is a regulatory body. Indian Accounting Standard 16 relates to PPE, property, plant, equipment, PPE. Indian Accounting Standard 38 relates to intangible assets. Indian Accounting Standard 102 share-based payment. Diluted EPS is calculated when is existed in the capital structure of the company potential equity shares. जब potential equity shares हो तो diluted EPS is calculated. चलिए, तो ये हो गए आपके MCQs. उसमें एक चीज़ आपको याद रखनी कि जितने भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं उनके नाम आपको पता होने चाहिए दो तरह से. कैसे दो तरह से? ओनली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड दोनों के नंबर्स अलग अलग होते हैं. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सपोज 3 है तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 हो सकता है, पर बोथ ऑफ विल बी सेम, कि दोनों का नाम सेम हो. सो द पॉइंट इज़ दैट आपको दोनों के ही नाम आने चाहिए. चलिए, ये हो गया आपका इंग्लिश में नवंबर 2021. नाम इन गुजराती. નીચેનામાંથી નાણાકીય પત્રકોના મૂળ તત્વો કયા છે? બધા જ. શેરદીઠ કમાણીને લગતું ભારતીય હિસાબી ધોરણ 33. નીચેનામાંથી સારા નાણાકીય અહેવાલના આવશ્યક ગુણો? બધા જ. સંખ્યાત્મક ફરજિયાત પ્રગટીકરણ દેટ ઇઝ રોકડ પ્રવાહપત્ર. ભારતીય કંપનીના હિસાબો કોના દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે? બધા જ. નીચેમાંથી કયો મરજિયાત પ્રગટીકરણનો ઘટક છે? માનવ સાધનના હિસાબો. નીચેના પૈકી નાણાકીય અહેવાલ પ્રેષણના મુખ્ય હેતુ કયા? બધા જ. આ બધા જ એના કામો છે. સેબી એ શું છે? તો એ નિયમનકારી સંસ્થા છે. દેન ભારતીય હિસાબી ધોરણ 16 કોને લગતું છે? તો ભારતીય હિસાબી ધોરણ જે 16 છે એ તમારે પ્રોપર્ટી, પ્લાન્ટ અને ઇક્વિપમેન્ટ, મિલકત, યંત્ર અને સાધન સરંજામ. ભારતીય હિસાબી ધોરણ 38 કોને લગતું છે? તો 38 લાગે છે અદૃશ્ય મિલકતોને. ભારતીય હિસાબી ધોરણ 102 એ શેર આધારિત ચૂકવણીને લગતું છે. અને જ્યારે શેરદીઠ કમાણી, મંદ શેરદીઠ કમાણી ગણવાની આવે ત્યારે કયા શેર અસ્તિત્વ ધરાવતા હોય એને બી ગણી નાખવામાં આવે છે? સંભવિત ઇક્વિટી શેર્સ. તો આ થઈ ગયા તમારા MCQ ફોર ધ નવેમ્બર 2021. 50 માર્ક્સનું પેપર હતું, આ વખતે 70નું છે, બરાબર. અને એ પ્રમાણે MCQ આપણે કરીશું. તો ચલો, ઓકે. સો ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ જાન્યુઆરી 2021. The first one, a good financial report should be fair and objective oriented. Correct.
Financial statement mainly includes statement of P&L, balance sheet and cash flow, correct. Director's report is mandatory disclosure, exactly. Inflation account is voluntary disclosure, correct. Indian accounting standards are framed by Institute of Chartered Accountants of India, correct. 2021 जनवरी में ट्रू और फॉल्स पूछे जाए, MCQ नहीं, सो बी केयरफुल. देन क्योंकि MCQ में एक बेनिफिट ये रहता है कि यू हैव एन ऑप्शन, तो आप क्या अगर आप बहुत श्योर है नहीं है तो आप ऑप्शंस चेकआउट करके भी कई बार डिसाइड कर पाते हैं कि हाँ ये सही आंसर होगा. बट ट्रू एंड फॉल्स में आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता है कि आपको कोई ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें से आप सिलेक्ट करेंगे, राइट. सो बी केयरफुल इन केस ऑफ ट्रू एंड फॉल्स. No standard format is available for voluntary disclosure, correct. Going concern is not one of the characteristics of financial statement. Going concern is concept, it's not a characteristics. इस बेस पर correct. Non-current liabilities are settled in normal operating cycle, correct. Bad debt should be written off in the financial statement for the year 2021 if a debtor suffer heavy loss due to fire in the business in the first week of March. और हमारा जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को होता है, तो द पॉइंट इज करेक्ट. डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय शेयर होल्डर्स, रॉन्ग. डिविडेंड इज प्रपोज्ड बाय कंपनी और इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, राइट. बैंक बैलेंस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्लांट एंड इक्विपमेंट, नो. प्रेफरेंस शेयर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ अ कंपनी आर पोटेंशियल शेयर्स. Convertible preference shares are appearing in the balance sheet of a company are potential shares. पर हम इसको करेक्ट देते हैं ये सोच के कि यही कहना चाहते हैं, राइट. चलिए, तो ये हो गया हमारा जनवरी 2021 का पेपर. उसमें हम करेंगे गुजराती. एक सारो नाણાકીય અહેવાલ વ્યાજબી અને ઉદ્દેશલક્ષી હોવો જોઈએ, કરેક્ટ. નાણાકીય પત્રકોમાં મુખ્યત્વે નફા નુકસાન પત્રક, પાકું સરવૈયું અને રોકડ પ્રવાહ પત્રકનો સમાવેશ થાય છે, કરેક્ટ. ડિરેક્ટરનો અહેવાલ ફરજિયાત પ્રગટીકરણ છે, કરેક્ટ. ફુગાવાલક્ષી હિસાબી પદ્ધતિ મરજિયાત પ્રગટીકરણ છે, કરેક્ટ. ભારતીય હિસાબી ધોરણે રચના ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટ્સ ઓફ ઇન્ડિયાએ કરી, કરેક્ટ. મરજિયાત પ્રગટીકરણ માટે કોઈ પ્રમાણિત માળખું નથી, સાચી વાત. સાતત્ય કે ચાલુ પેઢીએ નાણાકીય પત્રકોની લાક્ષણિકતાઓમાંનું એક નથી, કરેક્ટ. કારણ કે એ એના કન્સેપ્ટ છે, મૂળભૂત આધારમાંનો એક છે. બિનચાલુ જવાબદારીઓ ધંધાના સામાન્ય કાર્યકારી ચક્ર દરમિયાન મૂકવામાં આવે છે, કરેક્ટ. જો કોઈ દેવાદારને ધંધામાં માર્ચ 21ના પહેલા અઠવાડિયા દરમિયાન આર્થિક મોટું નુકસાન થાય તે વર્ષ 2021ના નાણાકીય પત્રકોમાં ગલખાત તરીકે માંડી વાળવું જોઈએ. એ જ વર્ષનું ગણાય એટલા માટે. ડિવિડન્ડની ભલામણ શેર હોલ્ડર દ્વારા કરવામાં આવે છે, એ કંપની અથવા એના બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સ દ્વારા કરવામાં આવે છે. બેંક સિલક એ મિલકત, સાચા સાધનોનો ભાગ છે, ખોટું. કંપનીના પાકા શેરમાં દર્શાવેલ પ્રેફરન્સ શેર સંભવિત છે, કરેક્ટ. તો આ થઈ ગયા તમારા જાન્યુઆરી 2021ના ગુજરાતી અને ઇંગ્લિશના MCQ. નાઉ ધ નેક્સ્ટ વન ઇઝ ઓક્ટોબર 2019 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर. आप दिस 2 क्वेश्चन पेपर 19 एंड 80 विल हेल्प अस, बट 18 में सिलेबस चेंज था पर पहले 2 यूनिट सेम थे, तो हम उसी तरह करेंगे. सो 19, द कंप्यूटेशन ऑफ डेप्रिसिएशन ऑन बिजनेस असेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच एजम्पशन, गोइंग कंसर्न. ये एजम्पशन है, ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं है. गोइंग कंसर्न, एक्रूअल, मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, कंजर्वेटिज्म. तो ये जो हमारा डेप्रिसिएशन जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज अ गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग आर बेसिक एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सारे ही ये रिपीटेडली पूछा गया है. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एसेंशियल क्वालिटीज ऑफ गुड फाइनेंशियल रिपोर्ट, अगेन ये रिपीट है. 7F, इंडियन कॉर्पोरेट अकाउंट्स आर रेगुलेटेड बाय ऑल ऑफ द अबव. इंडियन कंपनीज एट रेगुलेटरी बॉडीज एंड प्रोफेशनल बॉडी. ये 1918 में से 2021 के जो दो पेपर के MCQ वो आए थे. द रीज़न इज़ दैट 21 जो है वो हमारा कोरोना का टाइम था, इसलिए उन्होंने पुराने पेपर में से ही MCQ पूछे हैं. हम ऐसी आशा रख सकते हैं कि कुछ MCQ रिपीट हो, बट यू हैव टू बी केयरफुल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ ट्रू एंड फेयर. सब कुछ ट्रू एंड फेयर में ये सारी चीज़ें आ जाती है कि करेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन दिखाओ, कंपनीज और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा बनाइए, एक्सक्लूजन करिए जो स्टेटमेंट गलत निकाला है. समझ में? हम पुराने MCQ इसलिए करते हैं कि हमारा वो साइड तो सेफ हो जाए कि चलो उसमें से भी एक आध पूछे तो हमें आना चाहिए. सेबीज, रेगुलेटरी बॉडीज़, ये सारे आपको 21 में मिले. क्वेश्चन 2. Question 1 is your first chapter, that is financial reporting, or question 2 is only about disclosure, right?
तो मैंडेटरी एंड वॉलंटरी डिस्क्लोजर फुल 14 मार्क्स क्वेश्चन पूछा है, राइट। फिर उसमें से जो 7 है उसमें क्या करते हैं कि आपका जो डिस्क्लोजर है उसमें से कुछ पॉइंट्स निकाल के पूछते हैं, जैसे कि PNL का शेड्यूल दे दीजिए या फिर मैंडेटरी और वॉलंटरी का डिफरेंस दे दीजिए। समझ में आया? विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट टू कैश फ्लो स्टेटमेंट? इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। Which of the following is included in mandatory quantitative disclosure cash flow statement? Which of the following is a component of voluntary qualitative disclosure environmental reporting? The format of disclosure is decided by as per Companies Act. Mandatory जो disclosure होता है वही कंपनी डिसाइड करती है, क्योंकि voluntary का तो कोई स्ट्रक्चर ही नहीं है. Description of the principal activities of the company is a part of director's report. Which is not mandatory disclosure? Fund flow statement is voluntary disclosure इन चारों में से. यूनिट 3, अच्छा 19 में आपका सिलेबस वही है, 18 में ही आपको ध्यान रखना है. होल्डिंग कंपनी युग लिमिटेड गिव्स अ लोन पेएबल ऑन डिमांड टू इट्स ओन सब्सिडरी कंपनी आर्या at 9% interest rate. How would subsidiary company disclose this in balance sheet? As a current liability. Loss due to event of fire after date of balance sheet. Balance sheet की डेट निकल गई है, but before approval of accounts by board of director. Consider as which of the following event not to be adjusted. Your डेट फाइनेंशियल ईयर की जो है वो निकल चुकी है, आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने भले ही अप्रूवल दे दिया हो. एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16, लॉस ड्यू टू फर्स्ट टाइम downward revaluation is debited to reserve and surplus. As per Indian Accounting Standard 16, profit due to subsequent upward revaluation is credited to reserve and surplus. Accounting standard relates to event after the reporting period is Accounting Standard 10. एक काम आप ये करेंगे कि सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम आप अच्छे से लर्न कर लेंगे विथ नंबर. ओके, चलिए क्वेश्चन 4 19 में आपके शेड्यूल आपके जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसके रिलेट ही था. एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 102, शेयर बेस्ड पेमेंट इज डिपेंड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्राइस ऑफ इक्विटी शेयर्स. एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड पार्टी? दोनों ही रिलेटेड पार्टी नहीं है, फंड प्रोवाइडर एंड ट्रेड यूनियन. एज पर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटेंजिबल असेट? मार्केटिंग राइट. ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 38 आप पढ़ेंगे ना तो अंदर दिया हुआ है कि कौन सी इंटेंजिबल असेट्स है जिसमें इसका नाम है. डायलूटेड EPS इज कैलकुलेटेड व्हेन देयर इज पोटेंशियल इक्विटी शेयर इन कैपिटल स्ट्रक्चर. अगर इक्विटी शेयर्स के आगे पोटेंशियल लिखा है तो वो आपके कैपिटल स्ट्रक्चर में तो वो डायलूटेड EPS के वक्त कैलकुलेट होगा. लेकिन जब प्रेफरेंस शेयर और डिबेंचर की बात हो रही है तो जब वो कन्वर्ट होगा तो ही उसे हम प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करेंगे. ओके, यहाँ पर भी मुझे ऐसा लगता है कि ये MCQ जो है प्रेफरेंस शेयर अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी और पोटेंशियल शेयर्स वो गलत ही होगा, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए इक्विटी शेयर्स. कौन से? पोटेंशियल इक्विटी शेयर्स. ये MCQ मुझे कंफ्यूजिंग लगता है. इक्विटी शेयर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी और पोटेंशियल शेयर्स, इनडायरेक्टली तो यही पूछा है. इसका यही होगा. हमें ये एज्यूम नहीं करना है कि कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स है, यहाँ पर इक्विटी शेयर्स ही आएगा. दिस जो स्टेटमेंट है वो गलत है. प्रेफरेंस शेयर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आर पोटेंशियल शेयर्स. नो, इक्विटी शेयर्स अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट ऑफ कंपनी आर पोटेंशियल शेयर्स. सो दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, राइट. चलो आगे बढ़ते हैं. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेट्स टू अर्निंग पर शेयर विच ऑफ द फॉलोइंग? 33. ये हो गया आपका ઓક્ટોબર 19 इंग्लिश. लेट्स स्टार्ट. ધંધાકીય મિલકતો પર ઘસારાની ગણતરી ચાલુ પેઢીનું ઉદાહરણ છે. નીચેનામાંથી નાણાકીય પત્રકોના મૂળ તત્વો કયા? બધા જ. નીચેનામાંથી સારા નાણાકીય અહેવાલના આવશ્યક ગુણો કયા? F, બધા જ F. ભારતીય કંપની હિસાબો નીચેના પૈકી કોના દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે? આ બધા જ દ્વારા નિયંત્રિત થાય છે. નીચેનામાંથી કઈ બાબતોનો સાચો અને વાજબી ખ્યાલ સમજાવવા માટે સમાવેશ થાય છે? બધા પોઈન્ટ્સ કામના છે. સેબી એ શું છે? નિયમનકારી સંસ્થા. યુનિટ 2 ડિસ્ક્લોઝરવાળું એટલે કે પ્રગટીકરણવાળું આખું યુનિટ છે. રોકડ પ્રવાહ પત્રકને લગતું ભારતીય હિસાબી ધોરણ ઇન્ડિયન અકાઉન્ટિંગ સ્ટાન્ડર્ડ નીચેના પૈકી કયું છે? રોકડ પ્રવાહને લગતું ભારતીય હિસાબી ધોરણ 7. સંખ્યાત્મક ફરજિયાત પ્રગટીકરણમાં નીચેમાંથી કોનો સમાવેશ થાય છે? રોકડ પ્રવાહનો. નીચેનામાંથી કયો સ્વૈચ્છિક ગુણાત્મક પ્રગટીકરણ છે? પર્યાવરણલક્ષી અહેવાલ.
કયું પ્રગટીકરણનું માળખું કંપની ધારા મુજબ નક્કી કરવામાં આવે છે? ફરજિયાત પ્રગટીકરણનું માળખું નક્કી થાય છે. કંપનીની મુખ્ય પ્રવૃત્તિનું વર્તન કોનો ભાગ છે? ડિરેક્ટરનો અહેવાલ. ખાલી જગ્યાએ ફરજિયાત પ્રગટીકરણ નથી, ભંડોળ પ્રવાહ પત્રક. યુનિટ 3 એ તમારા હિસાબી ધોરણોનું છે. શાસક કંપની યુગ લિમિટેડ ગૌણ કંપની આર્યા લિમિટેડના 9% દરે માંગવા પર પરત કરવાની શરતે લોન આપેલ છે. આ લોન ગૌણ કંપનીમાં કઈ રીતે બતાવાય? ચાલુ દેવા તરીકે. પાકા સર્વેના તારીખ પછી પરંતુ બોર્ડ ઓફ ડિરેક્ટર્સે માન્યતા આપી હોય તો આગના કારણે ધંધામાં થયેલું નુકસાન કઈ ઘટના ગણાય? બિનસમાયોજિત ઘટના. તમારી ઇવેન્ટ જે છે એ તમારા ડેટ પછી પાકા સર્વેની તારીખ પછીની છે. ભારતીય હિસાબી ધોરણ 16 મુજબ મિલકતોના પ્રથમ વખતના નીચા મૂલ્યાંકનથી થતું નુકસાન કોના ખાતે ઉધારાય છે? નફા નુકસાન ખાતે. ભારતીય હિસાબી ધોરણ 16 મુજબ મિલકતોના ફરી વખતના ઊંચા મૂલ્યાંકનથી નફો કોના ખાતે જમા થાય છે? અનામત અને વધારો. અહેવાલના સમયગાળા પછીના બનાવોને લગતું હિસાબી ધોરણ કયું છે? 10. ચોથું, ભારતીય હિસાબી ધોરણ 102 મુજબ શેર આધારિત ચૂકવણીની ગણતરી શેના પર આધારિત થાય છે? ઇક્વિટી શેરની કિંમત પર. ભારતીય હિસાબી ધોરણ 24 મુજબ નીચેના પૈકી કઈ અદ્રશ્ય મિલકત છે? આ બંને. ભારતીય હિસાબી ધોરણ 38 મુજબ નીચેના પૈકી કઈ અદ્રશ્ય મિલકત છે? માર્કેટિંગ અધિકાર. મંદ શેરદીઠ કમાણી ગણવામાં આવે છે જ્યારે મૂડી માળખામાં શું હોય? સંભવિત ઇક્વિટી શેર્સ. આના પરથી જ આ MCQ હશે અને એના કારણે જ આજે મેં હમણાં વાત કરી હતી કે દિસ બેંક્સ કંપનીના પાકા સર્વેમાં દર્શાવેલ પ્રેફરન્સ શેર એ સંભવિત શેર છે. આ મને એવું લાગે છે આ ખોટું છે. ઇક્વિટી શેર આવવું જોઈએ જે સંભવિત શેર છે, કારણ કે આ મુદ્દા ઉપરથી શેરદીઠ કમાણીને લગતું ભારતીય હિસાબી ધોરણ કયું છે? તો 33. આ થઈ ગયા તમારા ઓક્ટોબર 19ના MCQ. અને હવે ધ લાસ્ટ દેટ ઇઝ નવેમ્બર 2018. નવેમ્બર 2018માં ધ ફર્સ્ટ MCQ वैल्यूएशन. अच्छा, वन मोर थिंग, 70 मार्क्स क्वेश्चन पेपर, बट नवंबर 2018 में फर्स्ट और सेकेंड यूनिट ही है जो कंटिन्यू होते हैं. थर्ड एंड फोर्थ यूनिट चेंज हो गए तो हम फर्स्ट और सेकेंड यूनिट के ही MCQ करेंगे. वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी इज डन एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर. दिस सेंटेंस शोज विच अजम्पशंस? कंजर्वेटिज्म. हम लोग करते हैं ना कि उसकी कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों में से जो कम हो वही इन्वेंटरी की वैल्यू लेनी चाहिए. तो क्यों ऐसा क्यों करेंगे हम कि कमी को ध्यान में लेंगे? बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग अवर अकाउंट्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेटिज्म कंसेप्ट, जिसके हिसाब से हमें धंधा में, हमारे बिजनेस में जो भी पॉसिबल लॉसेस हैं उसको सबसे पहले ध्यान में रखना है, ना ही कि हम ये अज्यूम करते हुए जाएं कि हम तो बहुत सारा प्रॉफिट कमाना हमारा मेन ऑब्जेक्टिव अचीवमेंट रहता है. बट वी आर ऑलवेज थिंक अबाउट द लॉसेस, हाउ टू कवर द लॉसेस, हाउ टू लीव और हाउ टू रन द बिजनेस बाय थिंकिंग दैट कि जो भी लॉसेस होते हैं उसको कैसे कैसे हम कवर करते जाएंगे. सो द थॉट प्रोसेस इज कंजर्वेटिज्म. दैट इज़ वाई इस अजम्पशन के बेस पर हम ये वाला कंसेप्ट काम में लेते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट क्वांटिटेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट? स्टेटमेंट ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. क्रेडिट परचेज इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एज एंड व्हेन इट इज डन, नॉट एट द टाइम ऑफ पेमेंट टू क्रेडिटर्स. अक्रूवल बेसिस कंसेप्ट है, रियलाइजेशन भी बोल सकते हैं इसको आप. ये अक्रूवल जिस वक्त खड़ा होता है आपका खर्चा उसी वक्त उसको हम नोट करते हैं. तो ये सारे बिजनेस के बेसिक कंसेप्ट है, कन्वेंशन है. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको इंटरेस्ट है, बिकॉज इट इज़ बेसिक नॉलेज ऑफ अकाउंट्स. अगर आप अकाउंट्स में मास्टर हैं या आगे MPhil या PhD करना चाहते हैं, यू मस्ट अवेयर अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ अकाउंट्स. एंड इफ़ यू वांट टू नो दैट, क्योंकि ये बड़ा लेक्चर है आपको समझाना, तो टेल मी, राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स. भले ही आपके एग्जाम खत्म हो गए, मुझे पता है बहुत कम बच्चे इंटरेस्टेड हो गए, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द गोइंग कंसर्न, व्हाट इज़ द कंजर्वेटिव, व्हाट इज़ द मैचिंग ऑफ रेवेन्यू एंड एक्सपेंस, व्हाट इज़ द एक्रूवल और रियलाइजेशन बेस्ड कंसेप्ट. तो मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन यू. इंडियन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग. ये तीनों के द्वारा ये फॉलो हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम की बात आ रही है जिसके अंदर सेबी एंड कंपनीज एक्ट 2013 ये दोनों मेन हैं. तो अगेन मैं कंफ्यूज थी, लेकिन सही आंसर यही है, सी, सेबी एंड कंपनीज एक्ट 2013 की रिपोर्टिंग सिस्टम इनसे बहुत इन्फ्लुएंस होती है. चलिए आगे बढ़ते हैं. The utility of financial statement information is conditional on reliability. Who use the financial statement? Everyone, shareholder, creditor, government, right? Second unit, disclosure, ये भी सेम है.
Corporate financial report is prepared as per prescribed format decided by Company Act and prevailing guidelines. Accounting standard 3 relates to cash flow statement. This is AS. आप फिर बोलेंगे मैम ये गलत है. इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है कैश फ्लो स्टेटमेंट और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट. यही मैं लर्न करने को बोल रही हूँ. अलग अलग नंबर पर नाम सेम. Which of the following is not included in voluntary disclosure? Director's report. Which of the following is not mandatory disclosure? Environmental details. Which of the following is a part of director's report? Description of the principal activities of the company. Which of the following is regulatory body for corporate financial reporting? SEBI. तो ये 2 यूनिट हम करेंगे. थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट. फोर्थ तो पूरा सेगमेंट रिपोर्टिंग है. थर्ड यूनिट में कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, तो जस्ट कीप इट. तो 2018 ગુજરાતી મીડિયમ. સ્ટોકનું મૂલ્યાંકન પડતર કિંમત કે બજાર કિંમત બેમાંથી જે ઓછી હોય તેના આધારે થાય છે. વિચ કન્સેપ્ટ ઇઝ રૂઢિચુસ્તતા. નીચેનામાંથી કયું સંખ્યાત્મક નાણાકીય પત્રક નથી. મેન્ડેટરી और वॉलंटरी नहीं पूछा है, यानी कि फरजियात और स्वैच्छिक नहीं पूछा है. संख्यात्मक નથી, दैट इज संचालक मंडળનું પત્રક. ઉધાર ખરીદી જ્યારે થાય ત્યારે ચોપડામાં નોંધાય, दैट इज योर रियलाइजेशन कंसेप्ट. संपादन, एम आई राइट? या रियलाइजेशन एक्रूअल कॉस्ट. भारतीय नाણાકીય અહેવાલ પ્રેષણની વ્યવસ્થા નીચેના પૈકી કોનાથી પ્રભાવિત છે? સેબી અને કંપની ધારો 2013. સેકન્ડ, નાણાકીય પત્રકોની માહિતી કોના પર આધારિત છે? વિશ્વસનીયતા. નાણાકીય અહેવાલનો ઉપયોગ કોણ કરે છે? બધા જ કરે છે. કોર્પોરેટ નાણાકીય અહેવાલ કોના દ્વારા निर्धारित કરવામાં આવેલ માળખામાં તૈયાર કરવામાં આવે છે? કંપનીનો કાયદો અને માર્ગદર્શિકાઓ. હિસાબી ધોરણ 3 રોકડ પ્રવાહ પત્રક. સ્વૈચ્છિક પ્રગટીકરણમાં નીચેનામાંથી કોનો સમાવેશ થતો નથી? એટલે કે કમ્પલસરી છે, દેટ ઇઝ ડિરેક્ટરનો અહેવાલ. નીચેનામાંથી કયું ફરજિયાત પ્રગટીકરણ નથી? પર્યાવરણલક્ષી. નીચેનામાંથી કયું ડિરેક્ટરનો અહેવાલનો એક ભાગ છે? કંપનીની મુખ્ય પ્રવૃત્તિનું વર્ણન. કોર્પોરેટ નાણાકીય અહેવાલ માટે નીચેના પૈકી કઈ નિયમનકારી સંસ્થા છે? સેબી, રેગ્યુલેટરી બોડી. બસ આ બેના જ કરવાના છે. થર્ડ અને ફોर्थમાં તમારો સિલેબસ, फोर्थ तो आखो चेंज है, थर्ड में थोड़ा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड चेंज है, तो जस्ट लिव इट. 1 MCQ जो मैंने आपको बताया इक्विटी शेयर्स वाला, वो आप थोड़ा देख लेना, अदरवाइज़ बाकी सब तो सही है. यहाँ पर हम 4 क्वेश्चन पेपर हमने सॉल्व किए हैं. इसके तो MCQ, इतने MCQ तो आप करके ही जाएंगे. फिर आपने जो क्वेश्चंस पढ़े हैं थ्योरिकल, जो मैंने आपको IMP दिए हैं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, आप वो पढ़ के जाएँ. अंदर से MCQ पूछे जा रहे हैं, तो उसके लिए आपका डिटेल थ्योरी पढ़ना बहुत ज़रूरी है, राइट. चलिए स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बेस्ट ऑफ लक, बाय.